Hello students, how are you? I hope you are watching my last videos on concept of journal. Now we'll solve practical problems from government textbook on page number 84 and question number 1. So let us start without wasting the time. Journalize the following transaction in the books of Anand Journal Merchants. 2019 April 1st. Mr. Anand started business with cash. ओके सबसे पहले यहाँ पे कौन से दो अकाउंट आएंगे? यहाँ पे आएगा कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. बिजनेस स्टार्टेड मींस वेन एवर बिजनेस स्टार्ट किया है हमको यूज करना है कैपिटल. तो डेबिट व्हाट कम्स इन कैश. क्रेडिट द गिवर. हु इज गिवर? आनंद. तो आनंद के बुक्स में आनंद का नाम हम नहीं लिखेंगे. सो एंट्री विल बी कैश और कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, or you can write Anand's capital account. So let us write the journal entry. So entry will be cash account debit. Debit what comes in and credit the giver. Who is giver? Anand. You write only capital or you can write Anand's capital. Better will write capital. So cash account debit to Anand's capital account. Amount is 60,000 debit and 60,000. We'll also write narration being business started with cash. Being business started with cash. 5th April 5th. Purchase goods for cash. तो यहाँ पे there will be two accounts, purchase account and cash account. Now purchase account is a nominal account, so debit the expense and losses. Purchase कैसे किया कैश में, तो credit what goes out cash. तो entry will be purchase, entry will be purchase account debit, purchase account debit to cash account, debit the expense losses, credit what goes on. So here will be 30,000. Again narration, being goods purchased, being goods purchased. Now next 7, sold goods of rupees 10,000 to Suresh. Goods बेचा, कैसे बेचा, सॉरी किसको बेचा? सुरेश को. कैश के बारे में बोला नहीं है, तो ट्रांजेक्शन इज नॉट एन कैश ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन. तो गुड्स सेल किया है तो सेल्स इज माय इनकम, तो क्रेडिट द इनकम और गेन्स. तो एंट्री विल बी सुरेश अकाउंट डेबिट, सुरेश अकाउंट डेबिट टू sales account, debit the receiver and credit the income or gains, and amount is 10,000. You can also take out your current textbook and you can refer the question. It is not displayed on the screen. So entry will be being goods sold on credit. Next, purchased furniture. Purchase furniture from Mr. Govind on credit. क्या परचेज किया है? फर्नीचर. तो फर्नीचर इज एन एसेट, तो whenever asset is purchased you use asset account.
और कैसे परचेज किया है क्रेडिट में, किससे परचेज किया है, गोविंद से। तो फर्नीचर इज माय एसेट, सो रियल अकाउंट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ओके, किससे परचेज किया हमने, गोविंद से, तो टू गोविंद अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, हु इज गिवर, गोविंद, तो टू गोविंद अकाउंट, एंड अमाउंट इज ₹30,000, तो 30,000 डेबिट एंड 30,000 क्रेडिट। नरेश लिख दे, being furniture purchased, being furniture purchased, इतना लिखे तो भी काफी है। हमने गोविंद से परचेज किया ऑलरेडी, गोविंद अकाउंट हमने क्रेडिट किया है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो being furniture purchased। नेक्स्ट इज 15th, paid rent 3,000 and paid by debit card। now यहाँ पे two accounts are rent account and when we make the payment by debit card हमारे बैंक अकाउंट से पैसा जाएगा। तो फर्स्ट विल बी रेंट अकाउंट एंड सेकेंड विल बी बैंक अकाउंट। now rent is an nominal account and bank account is in personal account। तो डेबिट द एक्सपेंस लॉसेस, तो रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि रेंट क्या है, एक्सपेंस। तो रेंट अकाउंट डेबिट कितना पे किया सर, 3,000। ओके, एंड कैसे पे किया, डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड मींस इट विल गो फ्रॉम माय बैंक अकाउंट, तो क्रेडिट द गिवर, हु इज गिवर, बैंक, तो इट्स कम्स टू 3,000। नरेशन, बीइंग रेंट पेड बाय डेबिट card। Now this is very simple question. Most of entries are simple entry, means one account is debited and another account is credited। 21, purchase goods from Urmila on credit। क्या परचेज किया, गुड्स। ओके, किससे परचेज किया, उर्मिला से। तो टू अकाउंट्स इन्वॉल्व, परचेज अकाउंट एंड उर्मिला अकाउंट। कैश के बारे में बोला नहीं और पार्टी का नाम दिया है, तो ट्रांजेक्शन इज एन राइट ट्रांजेक्शन। नाउ परचेज इज एक्सपेंस, तो डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज इज ऑफ ₹70,000। ओके, किससे परचेज किया, उर्मिला से, तो उर्मिला इन पर्सनल अकाउंट, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, सो उर्मिला इज गिवर, सो उर्मिला अकाउंट क्रेडिट, तो टू उर्मिला's अकाउंट क्रेडिट द गिवर, हु इज गिवर, उर्मिला। नेक्स्ट नरेश लिखना है पहले, बीइंग गुड्स परचेज, इतना लिखेंगे तो भी काफी है। ओके, नाउ नेक्स्ट, पेड ट्रांसपोर्ट 1,000 टू यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट। नाउ क्या पेड किया है, ट्रांसपोर्ट। नाउ ट्रांसपोर्ट इज एन माय एक्सपेंस, तो ट्रांसपोर्ट अकाउंट, पेड किया मींस कैश गोज आउट, यू अंडरस्टैंड, वर्ड पेड मींस कैश गोज आउट। ओके, तो एंट्री विल बी डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉसेस, so transport, typing error, so transport charges, so transport charges account debit, or you can write transport expense, you will also do। so transport charge account debit, paid means what, cash goes out, credit what goes out, what goes out, cash, so transport charges account debit to cash account, amount is 1,000, here also amount is ₹1,000। Narration, being transport charges paid, being transport charges paid। Next, 30,
पेड टू उर्मिला ₹20,000 ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला। किसको पे किया? उर्मिला को। किसके बिहाफ पे? शर्मिला के बिहाफ पे। ओके, तो एक्चुअली पेमेंट किसको करना था? शर्मिला को, लेकिन पेमेंट हमने किसको किया? उर्मिला को। किसके बिहाफ पे? शर्मिला के। ना यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है, जिसके बिहाफ पे एक्सपेंस पे किया है उसका अकाउंट डेबिट करना है, तो हमको पेमेंट उसको करना था और उसके कहने पे हमने उर्मिला को किया है, तो अल्टीमेटली हमने शर्मिला के बिहाफ पे किया है, तो जिसके बिहाफ पे एक्सपेंस पे किया है उसका अकाउंट डेबिट करेंगे, तो शर्मिलाज अकाउंट डेबिट। नाउ वर्ड पेड, पेड मींस व्हाट? कैश गोज आउट, तो एंट्री विल बी शर्मिलाज अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, तो शर्मिलाज अकाउंट डेबिट, या जिसके बिहाफ पे करोगे उसका अकाउंट डेबिट होगा, तो शर्मिलाज अकाउंट डेबिट। पेड किया तो कैश गोज आउट, शर्मिलाज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये अमाउंट इज हाउ मच? 20,000 एंड 20,000। हमको जर्नल का टोटल करना है। पहले हम लोग नरेशन देते बीइंग कैश पेड टू उर्मिला on behalf of Sharmila, on behalf of Sharmila। ओके, अब इसके एंड हमको टोटल करना है, तो यहाँ पे हम टोटल कर लेते हैं। सिंस आई एम यूजिंग एक्सेल, इट इज वेरी इजी टू मेक द टोटल। तो ये whenever in exam question you are asked general question, means general question, always you should do the total. So this is our question number 1. I hope you must understand, it's very easy. Okay, now students, we'll start with question number 2. Again from ground textbook homework practical problems. Journalize the following transaction in the books of Gajaran. So we'll write in the books of Gajaran. 2019 May 3. Purchase goods for rupees 90,000 and amount paid by bank directly. क्या परचेस किया हमने? गुड्स परचेस किया, तो डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉसेस, सिंस परचेज अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। कैसे पे किया हमने? बैंक से पे किया, तो बैंक इज एन पर्सनल अकाउंट। अगेन डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हु इज गिवर? बैंक, तो एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। Amount is how much? Amount is rupees 90,000. 9,000 debit and 90,000. Narration. Being goods purchased from Gajan. Sorry. Being goods purchased. और दिया नहीं है, तो लिखेंगे being goods purchased, इतना काफी। Now next. 7th. Sold goods to Satish on credit. तो यहाँ पे कौन से दो अकाउंट आएंगे? सतीश अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। सतीश इन पर्सनल अकाउंट and sales in nominal account. तो debit the receiver, to receiver Satish, so Satish account debit, and goods sale किया, sales by income, तो credit the income or gains, तो entry will be Satish account debit, Satish account debit to sales account, debit the receiver and credit the income or gains. Amount is 30,000 and 30,000.
narration. Goods being goods sold on credit. Next, ninth, paid for postage. Paid means what? Cash goes out. So where will be cash account? क्या पे किया है? Postage. Postage is my expense. So debit the expense and losses. So postage account debit. Postage account debit. Amount is how much? 10,000. Okay. Or paid किया means paid means what? Cash goes out. Credit what goes out? What goes out? Cash. So cash account credit. Narration being amount paid for postage. Being amount paid for postage. तो ये बहुत इजी एक्सपेंस. कोई भी एक्सपेंस हमेशा क्या करोगे? डेबिट करोगे. और कोई भी इनकम हो क्रेडिट करोगे. अगर कैश से पे किया तो कैश अकाउंट क्रेडिट. बैंक से पे किया तो बैंक अकाउंट क्रेडिट. इज वेरी इजी. नाउ नेक्स्ट, पेड विजेस. ये बहुत सिंपल. ये भी एक्सपेंस है. तो अगेन डेबिट द एक्सपेंस लॉसेस. सो वेजेस अकाउंट डेबिट. वेजेस क्या है? एक्सपेंस है. अमाउंट इज 15,000. वेजेस अकाउंट डेबिट टू. कैसे पे किया? कैश में. तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट. व्हाट गोज आउट? कैश. तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश. अगर मैंने बताया एक्सपेंस पे किए, एक्सपेंस डेबिट होगा. और कैश में पे किया है तो कैश क्रेडिट होगा. बीइंग वेजेस पेड. इसका नरेशन बहुत सिंपल था. नाउ नेक्स्ट, रिसीव चेक ऑफ ₹30,000 फ्रॉम सती. चेक मिला तो कौन सा अकाउंट आएगा? बैंक अकाउंट. और चेक किससे मिला? सती से. Even bank account is personal account and Sati account is also personal account. To debit the receiver, credit the giver. Okay, sorry. हाँ बराबर है. तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. को रिसीवर बैंक. तो बैंक अकाउंट डेबिट. तो बैंक अकाउंट डेबिट. Okay, amount is rupees how much? Amount is 30,000. So debit the receiver, credit the giver. Who is giver? Sati. So to Sati's account. Amount is 30,000. So let us write the narration. Being check received from Sati. Being check received from Sati. बहुत सिंपल ट्रांजेक्शन था. Now next, received dividend. What received means cash comes in. So first account will be cash account. And dividend is my income. And dividend is my income. To create the income or gains. So entry बहुत easy. तो received dividend. तो cash account debit. You can also use bank account. Cash account debit to dividend account. क्योंकि मोस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट करते हो उसमें जो पैसा आता है तो यू ऑलवेज यूज बैंक. क्योंकि पैसा बैंक से आता है. ओके. तो डिविडेंड इज हाउ मच? ₹5,000. तो 5,000 डेबिट एंड 5,000 क्रेडिट. नरेशन बहुत सिंपल है. बीइंग डिविडेंड रिसीव्ड. नेक्स्ट, परचेज लैपटॉप ऑफ ₹40,000 एंड पेड बाय चेक. क्या परचेज किया? लैपटॉप. तो फर्स्ट अकाउंट विल बी लैपटॉप अकाउंट. कैसे परचेज किया? बाय चेक से. तो जब भी वर्ड चेक आए कौन सा अकाउंट आएगा? बैंक अकाउंट आएगा. ओके. तो लैपटॉप इज माय असेट. इट्स अ रियल अकाउंट. तो डेबिट व्हाट कम्स इन लैपटॉप. क्रेडिट द गिवर. हु इज गिवर? बैंक. तो एंट्री विल बी लैपटॉप अकाउंट डेबिट.
debit what comes in. Amount is how much? 40,000. And credit what the giver, sorry, बैंक से पे किया, credit the who is giver? बैंक. तो बैंक account, the bank account 40,000. Narration: being laptop purchased. Being laptop purchased. Okay. So now next date, deposit cash 10,000 into SBI means स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. क्या डिपॉजिट किया? कैश. कहाँ जमा किया? एसबीआई में. तो डेबिट तभी कौन सा अकाउंट आएगा? एसबीआई बैंक अकाउंट एंड कैश अकाउंट. तो डेबिट द रिसीवर. हु इज रिसीवर? एसबीआई बैंक. तो एसबीआई बैंक अकाउंट डेबिट. और यू कैन राइज ओनली बैंक तो भी चलेगा. ओके. तो एसबीआई बैंक अकाउंट डेबिट टू. क्या जमा किया? कैश. क्रेडिट व्हाट गोज आउट? कैश. तो एसबीआई बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. कितना जमा किया है? 10,000 डेबिट एंड 10,000 क्रेडिट. नरेशन इज वेरी सिंपल. being being cash deposited into bank. Now next, तो ये काफी सिंपल है. परचेज गुड्स ₹40,000 पेड बाय आरटीएस. तो वर्ड आरटीजीएस हो रियल टाइम. आरटीएस मींस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. ये जो भी पेमेंट होगा आरटीजीएस, नेफ्ट, आईएमपीएस का यूज करने का कौन सा अकाउंट? बैंक अकाउंट यूज करना है. राइट. तो यहाँ पे मैंने गुड्स परचेज किया है. अगेन परचेज इज माय एक्सपेंस. तो डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. तो आएगा परचेज अकाउंट डेबिट. परचेज अकाउंट डेबिट कितना है सर? 40,000. जब भी गुड्स परचेज किया हो ऑलवेज यूज करो परचेज अकाउंट. एंड अमाउंट पेड बाय आरटीजीएस. आरटीजीएस मींस क्या यूज करना है? बैंक. आरटीजीएस, आईएमपीएस. ओके, मैंने तुमको बताया था लास्ट टाइम. तो being goods purchased, इतने लगे तो भी चलेगा. तो being goods purchased. ओके. तो इजीली टोटलिंग भी हो गया है. इट इज नॉट वेरी सिंपल. आई होप यू अंडरस्टैंड द सम. इट्स वेरी इजी. और ऐसे और दो प्रैक्टिस सम्स आपको मिल जाए तो भी सॉल्व कर लेना. थैंक यू.